नमस्कार, मैं राघव टीएनसी लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम एंड फर्स्ट I would like to be present Ma Prem Anjali, who is the co-host of this program. And हम लोग जानते हैं कि हम लोग हर हफ्ते एक ऐसे ध्यान के बीज की बात करते हैं जो करुणा के कल्प वृक्ष में जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, या यूं कहें कि 108 seeds transformed by Osho. We have today Ma Prem Leela. So welcome Ma Prem Anjali with us. Pranam Pranam. to all the viewers, my heartiest welcome. And I'm so delighted that we have very special Osho's devotee, Ma Prem Leela, with us today, who has developed and taught mystic roles. Ma So Prem I'm Leela. going, yes, I'm going to present Ma Prem Leela with us. Pranam Ma. Greetings to all. So we'll be going to start this program because we all know, हम सब जानते हैं कि माँ प्रेम लीला जिन्होंने मिस्टिक रोज को डेवलप किया है और वो टीचर है मिस्टिक रोज मेडिटेशन के, और इसके अलावा नो माइंड और बॉर्न अगेन थेरेपी के लिए भी उनको जाना जाता है. So here is Ma Prem Leela, who has developed Mystic Rose, given by Osho to her. And she is the one who has taught Mystic Rose, trained all the Mystic Rose facilitators who are there nowadays facilitating this therapy. And not only that, she has also developed Born Again and No Mind therapies as well. Okay, Ma, heartiest welcome into our program. And Raghav will start to ask you questions. We are so delighted. We are on top of the moon with you being us. Thank you, Ma. Yes, yes. So we feel honored to have you on our channel on this program, 108 Seas Transformed by Osho. So, Ma, my first question is this: okay, how you come to know Osho? The question राघव पूछ रहे हैं कि आप ओशो के पास कैसे आई. Okay, so because this is needed to be translated, I will say a few things along the way and then we will pause so that all our beloved Indian friends can understand what I'm saying. So let's begin, and it'll be a little bit start and stop, but that's the way it is. So how did I come to know? How did I get connected with Osho? I had just moved to London from South Africa with my family. I have a son and a daughter, and my husband, of course, at that time. And very soon after arriving in London, within a month, I came to know of Osho, who was at that time called Bhagwan. And through a friend, I was suggested to do this very strange meditation. I knew nothing of meditation, called the dynamic meditation. So, Raghav? So, माँ साउथ अफ्रीका से लंदन मूव हुई अपने बेटा बेटी और हस्बैंड के साथ में, और आने के बाद में 1 महीने के भीतर भीतर उनको किसी फ्रेंड के द्वारा ओशो से के मेडिटेशन, डायनामिक मेडिटेशन से परिचित कराया गया. माँ उस समय तक मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और डायनामिक में ध्यान, सक्रिय ध्यान, जैसा कि हम सब जानते हैं, शुरू में सबको ही बहुत अजीब लगता है. तो इस अजीब से ध्यान से रूबरू हुई वो पहली बार. You say dynamic. I didn't hear the word dynamic. डायनामिक इस
translated Sakriya Dhyan in Hindi. Okay. Good. So now here I am suddenly at this strange center, the first center that opened in anywhere in the world other than where Osho was, in the flat. He was living in a flat in Bombay. This is 1973, beginning of 1973. And here I was entering this funny little meditation, underground meditation room, and about to do the dynamic. And that is how this whole part of my life just took a complete and utter turn, for the blessings began. That's all I can say. The day I started meditating dynamic was the beginning of the end of one thing and the opening of another. Beautiful. 1973 में जब ओशो को भगवान श्री रजनीश कहा जाता था और वो बॉम्बे में रहते थे और बॉम्बे के बेसमेंट में सक्रिय ध्यान चलता था, तब माँ ने सक्रिय ध्यान में हिस्सा लिया और वो उनको बहुत ही अजीब सा ध्यान लगा, मगर वहीं से उनकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, उनके परिवर्तन जीवन में होना शुरू हो गया. Through the dynamic meditation, and I need to explain that the way that Osho works, all his meditations are based on energy. And this was a pure energy process. I'm sure many of you already know about it. It's a 1 hour meditation divided into 4 parts, basically all energy work. And so this began to have an enormous effect on a lot of my inhibitions. And I began to experience myself very differently and very surprisingly, without any conscious effort on my part. Things just began to change at this time. And I was a young woman of 32 when I came to Osho. So, माँ सिर्फ 32 साल की थी जब वो ओशो के पास आई और जब उन्होंने डायनामिक ध्यान, सक्रिय ध्यान करना शुरू किया तो ऊर्जा बदलने लगी, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं जो भी करते हैं इस ध्यान को, कि इसके 4 चरण हैं और इन चारों चरणों में से 3 चरणों में तो शुरू के आधा घंटा तो पूरा ऊर्जा का ही खेल है और माँ की ऊर्जा बदलने लगी उनके बिना जाने ही, और वो कैसे उनके सारे जो कि इनहिबिशंस थे, जो कि उनके पकड़ थी चीजों के प्रति या उनके पूर्वाग्रह थे, वो कैसे गिरने लगे वो खुद भी नहीं जान पाई. At this time of my life, I knew nothing of the back of meditation. And when this person had initially suggested that I begin to do this, I said, I know nothing about meditation. And he said, that is good. Never mind, you begin. He was an Indian sharp singer. And very often he would say to me, never mind, you begin. And he was a very important person in supporting me in the early years of my sannyas. And dynamic was just the beginning. And then I will jump on to the next part of what happened maybe a year or a couple of years later. So, जब माँ ने ध्यान करना शुरू किया तो ध्यान के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था. तो जिन्होंने उनको ध्यान कराया वो उनसे माँ ने बोला कि मुझे ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं आता. तो उन्होंने कहा ये बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छा है, आप शुरू कीजिए और आप ध्यान कीजिए. तो उन्होंने ध्यान करना शुरू किया और ये व्यक्ति जो थे, इन्होंने माँ को बहुत सहारा दिया, बहुत सपोर्ट किया शुरू किए उनके सन्यास के दिनों में, और 2 साल के बाद दूसरे और ध्यान से भी उन्हें परिचित कराया. When I first started the dynamic, I had a lot of reservation about the few people, there were only very few people at that time that were wearing very bright orange robes and necklaces with beads, and then their big winter jackets over it, and their boots, they looked ridiculous. And I would think, this is not for me. I don't like any uniformity, and what are these beads about anyway? But then
But then this was, and I carried this idea, I will not take the whatever this is called, sannyas, not for me. I'm laughing because I had the same thing. Yeah, many people. You want to translate that and then I go on. तो जब Yes. जब माँ ने शुरू में ध्यान करना शुरू किया और सन्यासियों से मिलना जुलना शुरू किया, तो वो सन्यासी गहरे गैरिक वस्त्रों में होते थे, बड़ी सी सर्दियों का कोट पहने हुए और जूते बूट्स वगैरह पहने हुए और साथ में माला लटकती हुई, और माँ कहती थी ये बिल्कुल बेकार लगते हैं, मुझे उधर नहीं जाना है, मुझे ये चीज सन्यास की तरफ कभी नहीं जाना है। ध्यान ठीक है मैं कर रही हूँ, मगर मैं इस सन्यास वन्यास के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। So But you beautiful. So, Ma, yes. shall I continue with the Yeah, story? carry on. Okay. So then the next thing is we're doing dynamic regularly now, and I'm still holding on. And then one Sunday I go to the center and I'm feeling a bit strange in the body. And I say to Veena, Ma Veena was helping this man run the center, Shyam Singer, and I had a lovely connection with her. She was also a fellow South African. And after the meditation, the dynamic, I went into a back room and there was a big picture, very much like the one that is behind me. Your left from your right. And I sat down in front of this picture and I just looked at the space and I couldn't move. And then Veena came in, sat next to me quietly, and out of my mouth came the words, I want to take sannyas. And I got such a shock because everything in me had been very independent, and there you go. So एक बार तो माँ डायनामिक मेडिटेशन करती रही और ये उनका एक दिनचर्या बन गई। उसके बाद एक दिन अचानक उनको अपने शरीर में कुछ अजीब से अनुभव हो रहे थे, और ध्यान के बाद जब वो पीछे के कमरे में बैठी, वहाँ ओशो की तस्वीर लगी हुई थी, बिल्कुल ऐसी ही जैसी माँ के पीछे अभी लगी हुई है, और उनको पता नहीं कि क्या हुआ, और वो उस तस्वीर के सामने झुककर बैठ गईं। और उसी समय वीना जो कि सहायता करती थी स्वामी प्रेम सिन्हा को ध्यान केंद्र चलाने में, वो उनके पास में आकर चुपचाप बैठ गईं, और अचानक से माँ के बिना जाने ही उनके मुंह से निकला, मुझे सन्यास लेना है। So Sorry, did you beautiful. want to ask me something? Yes. Raghav, can you another question, Yeah. please? Yes. So, Ma, when you took sannyas, okay, how was the feeling at that time? Okay, so then I was sitting there in front of this picture. Out come the words. Veena gets up, she walks out of the room, she comes back with a mala and she puts it over my head. And for 1 hour, I laughed and cried with such totality and completely unaware, not understanding what was happening to me. This energy that was coursing through my body was completely new. I was quite innocent about all of this meditation, and I had no experience like this before. I was completely and utterly, most beautifully overwhelmed. तो जब ये शब्द माँ के मुंह से निकले कि मुझे सन्यास लेना है, वीना जी उठी और कमरे से बाहर चली गई। जब वो आई तो उनके हाथ में माला थी और वो माला उन्होंने माँ के गले में डाल दी। जैसे ही माला उनके गले में डली, 1 घंटे तक बिना उनके जाने, बिना उनके समझे, वो हंसती गई और रोती गई। 1 घंटे तक का वो जो अनुभव था, वो बहुत अनजाना अनुभव था। वो उससे बिल्कुल भी परिचित नहीं थी, और जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही खूबसूरत था और उनकी पूरी आत्मा तक को नहला गया। It's a very beautiful feeling, I must say. And yes,
Ma, I would like to ask one more thing. When you saw Osho for the first time, Okay, that would be the next jump to for me, because I took the sannyas in 1973, early 73, and then I stayed. I got my sannyas name, Ma Prem Leela, by mail, because I wrote to Osho for my sannyas name. This is what we did in those days. And then in 1975, I said to my family, I need to go and meet Osho Bhagwan now, as he was then called. I have waited now for two years, or however long it was, almost 2.5 years. I need to go and meet. So I flew to Bombay with a girlfriend. And the day I arrived in the ashram, there was Veena again with all many other friends that I then knew. And they arranged for me to have darshan that very night. I was so jet lagged. I was in this country that my eyes were sticking out. My eyes were on sticks. Such a different culture. I mean, I was a bit of a girl coming from way back in no experience about the larger world. So I was very impressed and in awe of everything that was going on in this amazing new country. So I'll tell you about the darshan when we do this translation. ओके तो माँ ने संन्यास ले लिया 1973 में और 2-2.5 साल तक वो इंतज़ार करती रहीं और ध्यान करती रहीं, मगर 1975 में फिर उन्होंने अपने घर में सबसे कहा कि अब मुझे भगवान श्री के दर्शन करने हैं और मुझे जाना है हिंदुस्तान। तो वो जब पहली बार भारत आई, तो आकर वो बहुत आश्चर्य से भरकर उस नए वातावरण को देख रही थीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे उनके जाने पहचाने मित्र भी थे और साथ में माँ वीना भी थीं, और वहाँ जाकर वो बहुत ही खुश और प्रसन्न और गदगद थीं और चारों तरफ आश्चर्य से देख रही थीं। और उसी रात को उन लोगों ने उनके लिए दर्शन का भी इंतज़ाम कर दिया। और हालाँकि माँ बहुत जेट लैग थीं, मतलब वो उसी दिन वो फ्लाइट से आई थीं, तो थकी हुई भी थीं और उनकी आँखें जो थीं थोड़ा आराम भी करना चाहती थीं, मगर क्योंकि उसी दिन उनके लिए दर्शन का इंतज़ाम हो गया, तो फिर वो दर्शन के लिए गईं। So I arrived at the gates and everybody was going in, just a few people, I think there was 12, going to the evening darshan to meet with Osho Bhagwan at that time. And I was so nervous. I could feel my whole body was vibrating. I again was like, what's going on? I was very naive, very unaware of all of what was happening to me. But there had been some other part of me that knew that without a second's doubt that this was where my life was going to go. Once I had listened to Osho and taken the sannyas and the changes that were happening in me. So here I was, this trembling wreck, walking down Lao Tzu Drive to the little veranda where Osho was waiting. He was already there. I thought he would come later. I had no idea. I was already so nervous. I was holding back. I was the last person to come into the little sitting. And when I saw Osho for the first time, I had such a strange reaction. I had an energy that just flew out of me, and I remember my hands jumping to my hara, holding my hara, and I bellowed like a buffalo. I just made so many loud noises and just started immediately to cry. Again, this sort of incredible overwhelm. I had no idea what was happening to me again. And then we came forward. I put my head onto his feet
And I sat on the side of the sannyas, the darshan, to the end. I was the last person. I sat next to Lakshmi and cried the whole way through. That was my first meeting. तो जब माँ गेट पर पहुंची तो वो कांप रही थीं, बहुत नर्वस थीं और अजीब सा अनुभव हो रहा था। जब वो अंदर गईं और उन्होंने पहले ओशो को देखा, तो अजीब सा एक बॉडी में उनकी शरीर में रिएक्शन हुआ और वो उनको लगा कि बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं और वो एकदम से नीचे झुक गईं, पैरों में ओशो के गिर गईं और फिर लक्ष्मी माँ के पास में बैठ गईं क्योंकि वो आखिरी थीं, क्योंकि केवल 12 ही लोग दर्शन के लिए गए थे उस वक़्त। ओशो वहाँ पहले से मौजूद थे। माँ को कोई आइडिया नहीं था, वो सोच रही थी शायद ओशो उठकर आएँगे, लेकिन उनको देखते ही उनका पूरा का पूरा अस्तित्व जो था, वो काँप गया और वो बैठकर फिर पूरे टाइम रोती ही रहीं। Okay. So beautiful, Ma. So beautiful. It was a very rough kind of arrival, very loud and very noisy, and poor me, I had no idea what was going on, but he chuckled and then he just set me down at the end and gave me time to settle. So that was my first meeting with Osho. So ओशो को देखते ही जैसा माँ का रिएक्शन हुआ था, तो ओशो हंस पड़े और उन्होंने माँ को संयत होने का पूरा मौका दिया, सेटल डाउन होने का मौका दिया और सबसे अंत में उन्होंने माँ को दर्शन दिए। Raghav? Yes. So, Ma, I'm coming up to next question. Okay. Looking at Osho's eyes yesterday and today. No different. Unbelievable. Just when you look into the eyes of an enlightened being, well, of Osho, it's like an entry into the beyond, and the compassion and the love and it's as if all of that he is as an enlightened being is just there in the eyes for those who can see it and those who can feel it. It's not only the eyes; it's the hands. It's the beauty and the grace of the man himself, and then of course it's all that he is sharing. Words fail me more than that. So राघव ने पूछा कि ओशो की आंखें उस वक्त जो आपने देखी थी और आज जो आप देखती हैं, तो माँ कह रही हैं कि बिल्कुल वही, कुछ भी नहीं बदला। जैसी आंखें तब थीं वैसी अभी हैं और प्रबुद्ध एनलाइटेंड ओशो की आंखों में सब कुछ बसा हुआ है। इतना सारा गौरव, इतना सारा प्रभुत्व और इतना सारा बुद्धत्व और सब कुछ, पूरी गरिमा, पूरा ऐश्वर्य, पूरा संसार उसी में समाया हुआ है उनकी आंखों में। और ना सिर्फ आंखों में, उनका पूरा व्यक्तित्व, उनके हाथ, उनका चलने का तरीका, उनका पूरी बीइंग, उनका पूरा अस्तित्व जो है एक पुरुष की तरह, बल्कि एक पूरे अस्तित्व की तरह है। और शब्द जो हैं कम पड़ जाते हैं जब हम उनकी बात करना चाहते हैं। Thank you very much, Ma. I'm coming up to next question. Okay, how you come to be a part of Osho community? In 1979, I said to my whole family, we were living in an Osho commune at that time. I said, I now need to go and be with Osho, who's coming with me.
my kids, who were both sannyasins already, they chose to be sannyasins. I didn't pressurize them into it. Immediately said, yes, we're coming. And my husband also, we were a family of sannyasins. We had all decided to take sannyas. Agreed. And we very soon left England for Pune. And when we arrived there, I began to work in the press office. And so I was there with a huge group of people. Krishna Prem was in charge of the press office, and he was a wonderful person to work with. And I was taking journalists around to show them the ashram, to take them to discourse in the evening. And that was in Pune 1. And then I will just describe, when you've translated this, the next chapter, which is Pune 2. So Pune 1979 में माँ ने अपने परिवार से कहा कि अब मुझे जाना है और आश्रम में रहना है, और माँ के दोनों बच्चे भी तब तक सन्यासी थे और माँ के पति भी तब तक सन्यासी थे, तो पूरा परिवार ही सन्यासी परिवार था। तो सब ने बोला कि हाँ, हमें भी जाना है, और पूरा परिवार जो है पूना 1 में आ गए। और वहाँ पे सबसे पहले माँ को जो काम मिला वो प्रेस में काम करने का मौका मिला, और जहाँ उन्होंने काम किया जिनके साथ, वो उनको बहुत पसंद आया, और वहाँ से ही उनकी यात्रा शुरू हुई। और अब वो पूना 2, पूना 2 के बारे में बताएंगी। When I talk of Pune 2, it's just that there was Pune 1, then there was the ranch, which we're not discussing, and then my involvement in Pune 2, which was when we all slowly drew back to India, and I arrived back in 1987, and began working as a massage teacher and therapist, and very soon began to run the group department. I then organized the whole group department, the plaza, everything, and finding rooms in which the therapists could work. Basically, the coordinator of the whole group department. And that's what I did for a very long time in Pune too. So उसके बाद वहाँ के बाद फिर 1987 में फिर से माँ पूना 2 में अपने परिवार के साथ गई, और वहाँ पर वो बहुत समय तक मसाज थेरेपिस्ट थी, और साथ में कोऑर्डिनेटर थी ग्रुप की, जहाँ पे सारे थेरेपिस्ट वगैरह सम्मिलित थे। And then in 1988 of March, I was called by Neelam, who was Osho's Indian secretary for the Indian friends that came from all over India, and asked to give Osho some sessions, some massage sessions, as his body was very sore from what had occurred in America. And so for a period of perhaps 2 weeks, every morning I would go and give him a bodywork session for about 2 hours every day. So that was a gift beyond description, and very beautiful. I felt so privileged. And then out of that came that I was then given the mystic rose. And I will explain that later. तो 1988 में नीलम माँ ने माँ को बुलाया और ओशो को मसाज देने के लिए बोला। ओशो के शरीर में उस समय तक बहुत दर्द था, क्योंकि जो कुछ भी अमेरिका में उनके साथ हुआ था उससे, और करीब 2 हफ्ते तक हर दिन 2 घंटे माँ ने ओशो को मसाज दिया और उनके शरीर को आराम पहुंचाने के लिए उनकी सेवा की। And then it was a slight, maybe a month later,
or 3 weeks, I cannot recall exactly, I got a message from Ananda, who was Osho's other secretary, to come to meet her at Lao Tzu Gate, which was the main gate to Osho's house. And there she handed me a piece of paper on which was typed the instructions for the first 2 weeks of Mystic Rose, laughter and tears. And at the end of the description, it said, person to run it, Leela. And out of the blue, boom, once again, a great blessing of which I am beyond grateful. I don't know how to describe beyond gratitude, but so it is. My life changed again in an incredibly beautiful way. So उन मसाज सेशंस के करीब 3 हफ्ते या 1 महीने बाद, माँ को समय अवधि ठीक से याद नहीं है, आनंदो जो कि ओशो की दूसरी सेक्रेटरी थी, उन्होंने बुलवाया लीला माँ को लाओ त्सु हाउस के गेट पर, और वहां पर उन्होंने उनके हाथ में एक कागज थमा दिया जिसमें कि लिखा था पहले 2 हफ्ते हंसी और रुदन के लिए मिस्टिक रोज के, और लिखा था चलाने के लिए, देने के लिए इसको लीला को। माँ तो बहुत ही गहरे अहोभाव में घिर गई, और वो अहोभाव से भी ऊपर के गहन 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 अहोभाव की दशा में पहुंची, और उसके लिए वो आज तक भी बहुत तहे दिल से ओशो की आभारी हैं, और कि उन्होंने उनको इस काम के लिए चुना। So thank you so much, Ma. And I'm coming up to one more thing. Like Swami Atmaninaji, he asked the one question. Okay, tell us about the book Mystic Rose. So this, let me just go back a little bit and then why the book has happened. When I began doing the Mystic Rose in 88, it was just 2 years before Osho left his body. I had to, from the very beginning, I had very little instruction from Osho. It was just the trust was so great, and I just had to make it up. Like, how do we do this, and how does it work? But something deep inside me managed to feel along the way how this came to be. So, with just a few questions asked of Osho at that time to help me, to guide me a bit, this creation, and I'm sure he had quite a hand in it somewhere on a different level, became the work that I did now for 32 years with thousands and thousands of people all over the world. And what I was thinking of now that I'm in my 80s, and I said before I pop off, I want to leave a record of these meditative therapies for posterity, because this process is so profound, is so incredibly transformative and healing for the people that have done it, many of them over and over again, that the reason the book has happened is because a record needs to be left. And it's all about how I designed it, how it came about, the effect it has, why it works. It's pure energy process. And then a third week was added very soon after, which I'll tell you after the translation, because I'm going on too long now. Yes. तो माँ को जो ओशो ने उनके अंदर विश्वास किया और ये इतना बड़ा प्रोसेस उनको सौंपा, उसके लिए
वो बहुत ज़्यादा अहोभाव में थीं और उन्होंने ओशो से कुछ सवाल पूछे समय-समय पर उसको डेवलप करने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं अंदर उन्हें विश्वास था कि ऊर्जा के तल पर ओशो उनके साथ काम कर रहे थे और वहीं से उनके अंदर से उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे इस विधि को पूरी तरह से जब उन्होंने विस्तार दिया, तो उनको पूरा विश्वास है कि शारीरिक तौर पर तो ओशो से उन्होंने सवाल पूछे और उन्होंने कुछ जवाब दिए, मगर ऊर्जा के तल पर ओशो उनके साथ काम कर रहे थे और इसीलिए वो इतनी सुंदर तरीके से हो पाया। फिर उसके बाद स्वामी आत्मनिनाथ जी ने सवाल पूछा कि उनकी किताब के बारे में जो उन्होंने मिस्टिक रोज़ पर लिखी है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये उन्होंने इसलिए लिखी है कि वो अपनी पूरी यात्रा उन्होंने इसमें बताई है कि कैसे मिस्टिक रोज़ का जन्म हुआ, कैसे इसका विस्तार हुआ, कैसे उन्होंने की है और इसलिए कि वो इस बात का एक रिकॉर्ड छोड़कर जाएँ कि अगर वो शरीर छोड़ दें, तो कम से कम सबको पता रहे कि सही में मिस्टिक रोज़ कैसे करना चाहिए, उसको करने से क्या फ़ायदा होता है क्योंकि ये पूरा का पूरा ऊर्जा का को उत्थान के लिए, ऊर्जा को उठाने के लिए प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस क्या है, इसके क्या लाभ हैं और ये कैसे करना चाहिए, ये फर्स्ट हैंड उनके अपने मुँह से नैसर्गिक तरीके से सबको मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने ये किताब लिखी है। और फिर क्योंकि ओशो ने तो शुरू में केवल 2 ही हफ्ते हँसी और रुदन का ही उनको निर्देश दिया था। फिर तीसरा हफ्ता उसमें कैसे जुड़ा, ये बात माँ अब बताएँगी। So then Yes, ma'am. it came about that there was just 2 weeks to start with, and then the third week, which was entitled The Watcher on the Hills, came about. And so that became a 3-week process. Then what happened shortly after that is that Osho created 2 more meditative therapies. One was the born again, and the third one was called the no mind meditation, which is based on a Sufi technique. So all 3 of these techniques I developed, I facilitated, I participated, and I trained people. So particularly in Mystic Rose, I, for the first 16 years, was almost a full-on participant. So I didn't sit outside the group. I know this group through my being because this was my work as much as it was something that I was then teaching people about. And I knew it from within myself. And so that's how the 3 weeks came to be. तो शुरू में जब ओशो ने ये विधि माँ को दी, तब केवल 2 ही हफ्तों की बात हुई थी कि एक हफ्ते हँसना है और दूसरे हफ्ते रोना है। मगर साक्षी के लिए जो तीसरा हफ्ता है, ये बाद में जुड़ा और उसका ये है कि जैसे कि पर्वत पर बैठकर आप सिर्फ बादलों को आते-जाते या नदी को आते-जाते तथाथा भाव से देखें, ये तीसरा हफ्ता इसमें बाद में जुड़ा और फिर ये 21 दिन की विधि बनी। और बहुत सारे सालों तक माँ ने ये विधि जो है सबको कराई और ना सिर्फ कराई, इसके लिए बाकी के जो शिविर संचालक हैं, उनको भी उन्होंने ये विधि सिखाई। तो ग्रुप करना और ट्रेनिंग करना ये दोनों था। उसके साथ-साथ 2 और थेरेपी नो माइंड एंड बॉर्न अगेन भी माँ को दी गई, जिनका की माँ ने विस्तार भी किया और कराई भी और लोगों को सिखाई भी। मगर ये 2 विधियाँ उन्होंने जल्दी ही दूसरों को सौंप दी। लेकिन मिस्टिक रोज़ जो है, वो उनकी आत्मा तक में उतर गया है और वो मिस्टिक रोज़ को उन्होंने आत्मसात कर लिया।
वो उनके अंदर से आता है, वो उनके अंदर से अपनी पूरी बीइंग को भी वो पोर कर देती हैं, उड़ेल देती हैं दूसरों के ऊपर, और वो एक तरीके से माँ और मिस्टिक रोज एक दूसरे में जुड़ गए, घुल मिल गए, और वो माँ की का पूरा अस्तित्व ही बन गया। I'm reading the lovely messages that are coming up on the screen while you are translating. Thank Yes. you for all your sweet messages, everybody. Okay, Swamiji, you have another question for me, or Yes, shall yes, we just go? yes. Yeah, so I'm just coming up to the next question. The continuous attraction to Osho. What to say? It's not it's not an attraction. This is something that it's the. First of all, I always, as a young person, looked at life, and I had already a question like, is this all? Is this all the way people related? The judgments, the arguments between parents and people, the discord, the separation. Is this all? Already, this was there in me as a child. And when I met Osho, it was the beginning of understanding the human condition. And of course, the work was mine to do for myself, of how we are blinded and removed from our essential beingness through our negative belief systems, which is our conditioning and becomes our ego mind, our negative patterns of behavior. And in the mystic rows of all therapies that I had done, I did not do many group therapy groups. I was not someone who is very much attracted to doing therapy in that Western sense of the mind, of the word. Slowly, through releasing all this negative blocked energy, which inhabits the body, every time a child inhabits the natural flow of their energy, that becomes what you call an energy block. And then the energy cannot move fluidly through the system and through your energy field. And so there's these rearrangements of energy within us, which ends up in neurosis, fear, anger, whatever, endless list of words, depression, self-hatred, whatever, depression, so on. Now, when you laugh for 3 hours a day, this is a 3-week process for 3 hours a day. When you laugh, the force of energy dislodges all of this, slowly dislodges all of this negative energy blocks out of your system. And when you cry for 3 hours every day, the healing of so many wounds for lifetimes can be released. And Osho beautifully describes it in the book, The Mystic Rose. And chapter 30 is where he describes the Mystic Rose meditation. Very worth reading, and you get his words for it. And then finally, when we have cleaned out so much of our pain and sadness and despair, and we have opened our joy and our capacity to see life through the eyes of laughter, then we can sit in silence and begin to move into our inner consciousness. And that is the essence of this process. And that's what I did for years and years and years. Over 100 times I have done this process, and I feel very cleaned out. So beautiful, Ma. तो I hope you could remember. I'm sorry, I'm giving you such a big job doing this translation. I can go on and on. I'm sorry. Yeah, it's a really big job. Do your best, Yes. Anjali. Do your best. तो ओशो से मिलने से पहले ही माँ के मन में हमेशा ये सवाल उठते थे कि क्या यही जिंदगी है? क्या ऐसे ही जैसे लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, इतने सारे मुखौटे पहने हुए हैं,
अपने आप में ही अंदर टूटे हुए हैं, अपने अपने ही हज़ारों हिस्से हैं। और तो उनके मन में ये सवाल उठता रहता था, क्या यही ज़िंदगी है? तो इतने सारे हमारे नकारात्मक विचार, नकारात्मक हमारा जो संस्कार पड़े हुए हैं और जो हमारे हम सोसाइटी सब सिखाता है, उल्टा-सीधा, क्या यही ज़िंदगी है? ओशो के पास आने के बाद उनको समझ में आया कि किस तरह ओशो ने जो अपने विधियाँ दी हैं ध्यान की, उनसे ऊर्जा जो दबी पड़ी है, जो गाँठें बनाए हुए है हमारे शरीर में, हमारे मन में, वो किस तरह से बहनी शुरू होती है। और ख़ास तौर से ये मिस्टिक रोज़ का जो प्रोसेस है, उसमें जब 3 घंटे लगातार 7 दिन तक हम हँसते हैं, तो कैसे प्रफुल्लता के, प्रसन्नता के झरने जो कि दबे पड़े थे हमारे पत्थरों के नीचे, वो कैसे खुलने लगते हैं और कैसे हमारी सारी बीइंग जो है, हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व जो है, वो कैसे उन उन एनर्जी ब्लॉक्स जो थे, जो ऊर्जा के की गाँठें थीं, उनसे खुल-खुल कर बाहर आने लग जाते हैं। और फिर जब रोने का प्रोसेस शुरू होता है अगले हफ्ते, और 3 घंटे लगातार 7 दिन तक रोते हैं, तो जन्मों-जन्मों के जो दबे हुए हमारे अंदर संस्कार हैं, विचार हैं, भावनाएँ हैं, वो कैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खुल-खुल कर हमारी ऊर्जा को फिर पूरी तरह से बहाने में सक्षम हो जाती है। और फिर हम इस लायक बनते हैं कि 3 घंटे 7 दिन तक चुपचाप बैठ सकें और साक्षी भाव से देख सकें। और ये प्रोसेस माँ ने सैकड़ों बार किया है, और सैकड़ों बार करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनकी सारी जो बीइंग है, जो सारा उनका अस्तित्व है, पूरी तरह साफ हो गया है, पूरी तरह उनकी आत्मा, उनका शरीर, उनका मन स्नान कर चुका है और सारी गाँठें खुल गई हैं। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि माँ कितनी खूबसूरत है। ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ। जी, तो मैं भी यही कहूँगा, माँ बहुत खूबसूरत हैं, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड हर स्माइल, हर वॉइस इज़ सो ब्यूटीफुल। So, Ma, I'm just coming up to the next question, and I just want to know what people seek today when coming to Osho meditations compared to before. I don't think it's any different to when we were seeking. When I came, I think what is different is that we were at the beginning of the work, and the work is now so integrated into the energy. Osho's influence is now so much greater and known that people who do start to do the meditations, who are drawn to Osho's work, come in much quicker. They are more ready. Yeah, I know that this many people, many other therapists as well, and meditation leaders have told me that it's as if it's kind of speeded up a little bit. That's all. तो People are राघव seeking जी the ने same. तो राघव जी ने पूछा कि मित्र जो ध्यान के लिए पहले आते थे ओशो के समय में और जो अब आते हैं, उनके बीच क्या अंतर है? तो माँ बता रही हैं कि पहले जो था वो तैयारी चल रही थी, और सारी ध्यान विधियाँ भी अपने आप को खोल रही थीं, धीरे-धीरे विस्तार हो रहा था उनका, और लोग इतने तैयार नहीं थे, तो उनको बहुत समय लगता था। अब जो है ओशो की जो ऊर्जा है, वो लगता है ज़्यादा उपलब्ध है और पूरे अस्तित्व में बिखरी पड़ी है। और क्योंकि ध्यान की विधियाँ भी पूरी तरह परिपक्व हो गई हैं और वो अच्छी तरह आत्मसात हो गई हैं, इसलिए अब जो लोग आ रहे हैं और जो लोग जो ध्यान करते हैं, उनको ध्यान बहुत जल्दी घट जाता है और वो ध्यान में पूरी तरह से निमज्जित हो जाते हैं, ज़्यादा
ज्यादा जल्दी, ज्यादा त्वरा के साथ में, जितना कि उस समय में संभव नहीं था. I would also say at this point that in answer to that question is that there is a level within a certain part of humanity that is now more thirsty than ever, because the chaos and the disillusionment of the way that we live our lives is becoming, people are definitely becoming more curious and wanting to live a life of more depth, of more understanding, of consciousness. And so, as a result of that, this work and all the work around the world that people are presenting that helps to bring us to our inner consciousness and the consciousness that is all and everything that we are all part of, um, will be growing stronger and stronger as more people move from the outer world, who they think they are, to the inner connection to the whole, to the universality of who we are, the energy beings of who we are, the beings of light, the Buddhas who we are. And so Osho has spent all these years, he's not just a teacher, he's not just a guru, he's a master. He has spent his life every single day that he could teaching and putting out for our inner evolution. तो माँ का मानना है, और भी उनके जो मित्र हैं जो ध्यान कराते हैं, उन सभी का कहना है कि अभी के लोग ज्यादा प्यासे हैं, ज्यादा तैयार हैं. सॉरी अबाउट माय कॉफ. That's okay. तो अभी के लोग ज्यादा प्यासे हैं, ज्यादा तैयार हैं, और उनको कुछ ना कुछ जो जो भ्रम थे शरीर, केवल शरीर होने के और केवल बाहर होने के, वो टूटने लगे हैं. और जैसा कि आजकल बाहर का वातावरण चल रहा है, जितना कि केओस है सब तरफ, जितनी आपाधापी उबड़ खाबड़ जिंदगी है, उसमें सबको महसूस होने लगा है कि कुछ और भी है हमारे भीतर, और लोग तैयार हो गए हैं ज्यादा भीतर मुड़ने के लिए. तो केवल बाहर बाहर की ही दौड़ नहीं रही, कुछ लोगों में कम से कम अंदर की प्यास भी जाग गई है, और वो अंदर से भी अपने जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम कौन हैं, और अपने बुद्धा स्वरूप को भी पहचानना चाहते हैं लोग, और अपने अंदर को भी जानना चाहते हैं. इसलिए अब जो लोग आते हैं ध्यान कराने के लिए, क्योंकि अब करीब करीब 2 वर्ग हो गए, जो बिल्कुल ही बाहर हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है ध्यान से, लेकिन जो ध्यान की तरफ उत्सुक होते हैं, वो लोग काफी तैयारी के साथ उत्सुक होते हैं, और फिर वो ज्यादा अपने जो हैं प्रयत्न भी करते हैं, और ज्यादा त्वरा से और ज्यादा शिद्दत से काम करते हैं. Yes, very beautifully said, Ma. Ma, there is a one question, okay, for Mystic Rose. Okay, this Swamiji is asking, okay, we do at home 1 hour per day this Mystic Rose meditation? Would you like to answer this question, Ma? Yes, you can. And it would be helpful if you have done the 3-week process beforehand, because then you will have your body will have the understanding and the knowledge already of the flow of energy. But if you cannot manage totally to do that, to certainly go for it. And with the laughter, that's fine. Then if some sad music helps you in the second week, that will be good also, a little bit of sad music. And then, of course, just to sit in the third week, you give yourself an hour a day of beautiful soft music, or just simply silence, or listening to Osho. And I recommend, of course, that people listen to the discourses and
make up your decisions on how deep you want to go in this life. Do you want to just live on the surface? Like we come, we live, we grow up, we go to work, we have children, we get married, and we grow old, we retire, and we die. And what Osho always said was, we come as a seed. The mystic rose is a seed. And if this seed is not nurtured and allowed to flower, then our life has been an exercise in utter futility. We are here our intrinsic reason for being here is the challenges that are presented to us through our life are the blocks through which the building blocks through which we grow deeper and deeper and have a much more grand, expanded understanding of why we are here at all. And that is to return to love, to know love. तो Not एक just हम who's going to love me, but love. तो एक स्वामी जी ने सवाल किया कि क्या हम घर पर मिस्टिक रोज कर सकते हैं 1 घंटा रोज? तो माँ का कहना है कि ग्रुप ज़रूर करना चाहिए अगर कर सकें तो, पर अगर नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल बिना कुछ करने की बजाय 1 घंटा खुद कर लेना भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसमें जब हँसते हैं तो कुछ हँसी का सा आप संगीत लगा सकते हैं। जब अगले हफ्ते जब आप रोएँगे तो आप कुछ रुदन का कुछ सैड म्यूज़िक लगा सकते हैं। और तीसरे हफ्ते जब आप चुपचाप साइलेंस में बैठेंगे, तब आप या तो कुछ सॉफ्ट सा म्यूज़िक लगा सकते हैं या ओशो का डिस्कोर्स लगा सकते हैं, ओशो के प्रवचन सुन सकते हैं उस समय पर। और ओशो के प्रवचन सुनना भी आपको बहुत गहन शांति में ले जाता है, तो वो उसको भी माँ पूरी तरह से रिकमेंड करती हैं कि आप ओशो के डिस्कोर्सेस भी सुनें। और जीवन में सिर्फ रहना, खाना, सोना, शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना और बस काम करना, खाना-पीना, सोना, इसके अलावा भी ज़िंदगी कुछ है। क्योंकि अगर आप सिर्फ यही कर रहे हैं, तो जो बीज की संभावना में आप पैदा हुए हैं, वो आपकी बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है। आपने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया एक तरीके से। एक सुनहरी मौका था, जिसे आपने खो दिया। लेकिन अगर ये जो बीज है हमारे अस्तित्व का, उसको हमको पुष्पान्वित करना है और पल्लवित करना है और पूरी की पूरी तरह बढ़ाना है, तो फिर हम ध्यान में डूबें, अपने को जानें और तब अपने को जानने से हमें पता चलेगा कि हम सिर्फ इतना छोटा-सा शरीर नहीं है। हमारी आत्मा का हम बहुत सारा विस्तार है। हम इतने विस्तृत हैं, जितना कि ये पूरा अस्तित्व। ये जानने के लिए हमें ध्यान करना है और मिस्टिक रोज़ जो थेरेपी है, वो ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। तो इसलिए सभी को जितना कर सकें, उतना ज़रूर करना चाहिए। यस, बिल्कुल सही कहा अभी माँ प्रेम लीला ने। जो ध्यान के बीज को जो ओशो ने आपके अंदर बोया है और उसको करुणा का कल्प वृक्ष आप सबने खुद ही बनाना है। तो जैसा ओशो ने कहा है कि मैं तो बो चला, देखना बीज बीज ना रह जाए। तो I'm just coming up to the next thing. Here, one Swamiji is saying, Raghav ji, please let us laugh with Ma for some time. Well, that is easy for you to do. You don't even need me. And I am a bit of an old lady now, so I need to be in the groups with you. And I think many of the questions here are, I think I need to find a big place in India as there's so much response. And then I come and do a Mystic Rose with you all. And maybe Swamiji and Anjali will see what can be done about this, and then we will put our heads together, and maybe from this
broadcast, I return once again to India. I've run many Mystic Roses at Ocean Saga, but there is already somebody perfectly good who is running it there. And so we have to find a place, the people, me, and then it happens. It's not difficult. तो किसी ने अनुग्रह किया माँ के साथ हंसने का, तो माँ ने कहा कि ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो माँ बहुत सहर्ष राजी हैं आने के लिए भारत। और उन्होंने कहा है कि अगर राघव और मैं कुछ इंतजाम कर सकें, कुछ अरेंज कर सकें, कुछ ऑर्गेनाइज कर सकें, तो एक बड़ी जगह ले लें ताकि बहुत सारे मित्र वहां पर आ सके। और मैं विनती करूंगी ओशो से कि वो हमारी प्रार्थना सुने और ये हो पाए कि बहुत सारे मित्र लीला माँ के साथ मिस्टिक रोज कर सके। मैंने दो बार मिस्टिक रोज किया है लीला माँ के साथ, मैंने खुद 2 बार किया है और मैं जानती हूँ उसका क्या मतलब है। और मैं सच में हृदय से इस बात चाहती हूँ और ओशो को ये अर्जी लगाती हूँ कि ये हम हमारे सबके लिए संभव करें कि भारत में हम एक बड़ा सा मिस्टिक रोज ग्रुप करें। Thank you, Ma. Thank you, Ma, for being ready to come to India, and we will do our best to organize something. For sure. Yes, Ma. Lots of people who are saying, I want to join, I want to join. Already the group is filled. All we need to do is make it happen. Yes, Ma. So we'll soon do this, try to do this soon. Okay. And we'll give you very soon a good news for this. Okay, Ma. Yeah. So, we have to work around COVID, of course. COVID is the problem. Yes, COVID is a blocker. Yes. After this COVID or whatever, okay, so we'll try it soon possible. Okay, as early as possible. So we'll be coming up to the next question. But before that, I would like to show one thing to all of our viewers. If you want to connect to Ma Prem Leela, you can connect through this 2 websites, www.mysticrosemeditation.com and www.laughtertearssilence.com. If you want to connect to Ma Prem Leela, and if you'd like to know what are the things going on, where she's going to the next Mystic Rose, you can inquire from there. You can get information from there. Yes. Okay, that's fine. कोविड के चलते अभी 2 साल से कोई ग्रुप्स नहीं हो पा रहे थे, मगर माँ ने प्लान किया है एक ग्रुप जून में टर्की में करने के लिए। उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सूचना हम आप लोगों को बाद में दे देंगे। अभी के लिए अगर आप लोग माँ प्रेम लीला से जुड़ना चाहते हैं तो 2 वेबसाइट्स हैं जिनका की एड्रेस अभी स्क्रीन पर है, www.mysticrosemeditation.com and laughtertearssilence.com। तो आप इन 2 वेबसाइट्स के द्वारा माँ के साथ में जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं, या उनके जो भी कहीं और हो रहे हैं दुनिया में ग्रुप्स, उनमें शामिल हो सकते हैं। तो और हम कोशिश करेंगे कि भारत में माँ को फिर से लाया जाए। माँ लगातार बहुत सारे सालों तक ओशो निसर्गा में आती रही हैं और हम सबको कृतार्थ करती रही हैं। मैंने खुद भी 2014 और 2015 में 2 साल उनके साथ ग्रुप भी किया और फैसिलिटेटर ट्रेनिंग भी ली, और बहुत सारे मित्रों ने फैसिलिटेटर ट्रेनिंग्स ली हैं, बहुत सारे मित्रों ने ग्रुप किया है, हजारों लोगों ने किया है। अभी जो नई पीढ़ी तैयार हुई है उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से माँ लीला को भारत लेकर आए। Okay, what do we do now?
Thank you, Ma. So I'm coming up to the next question: how to stay relevant in such fast-changing time? Okay, good question. You see, we can sit and we can have meditation. And meditation is not something that for most people happens very quickly, because our conditioning and for lifetimes we have just continued in a very unconscious way of living, right? Uh, First of all, we live sort of in a dream. We live in the outer world, our work, our family, our this, our that, our car, our house. We live all on the outer. We we relate to our body with complete attachment, and we function more than whatever percentage through the mind. Now, to integrate meditation into daily life, because here we are, be it a dream or whatever that we are in, this body, many times Osho has said, you are not the body, you are not the mind. So until we begin to at least to recognize that there is another dimension, a much deeper dimension to who we are, then we can begin to integrate what we feel when in the silence, the presence of meditation, of when we are totally present in our being. And we have to bring that into everything that we do on a daily basis, whether it is drinking a cup of tea, whether it is brushing your teeth, whether it is cleaning your home, driving your car, talking to people, being aware. This is a big undertaking. This is no small, easy thing to do. It takes a lot of courage, determination, and such patience. And if one is willing and understands how vitally important this is for our inner evolution, otherwise we just keep coming back, reincarnating again and again, going through the same old movie. For us to move beyond the limitations of the ego mind and realize that we are far more than just a body and a brain. A mind is there to help us to do practical things, and it's perfect. It's a miracle. The body's a miracle. But there's just something so far greater. And until we come to know that and understand that, that we are just pure consciousness and not just living the everyday life without this depth. This is what we need to do. We need to integrate every bit of understanding that we have gathered into our daily life to make it a beautiful, wondrous experience. Sorry, very long again. It's okay, Ma. So If I could bring you a glass of water for your throat, I would do it. Yeah. Have a virtual drink. तो राघव जी ने प्रश्न पूछा कि ध्यान को नियमित रूप में कैसे रखें, कैसे उसको रेलेवेंट रखें. तो माँ ने कहा कि ध्यान जो है हमें हमारे असली रूप से परिचित कराता है. तो इसलिए हमारी हर गतिविधि में, हमारे उठने बैठने, चाय पीने, ब्रश करने, कार चलाने, काम करने, खाने पीने, हर चीज में अभी और यहीं, जो ओशो कहते हैं हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, और हर चीज हम ध्यान से करें.
क्योंकि अभी तो हम अचेतन अवस्था में रहते हैं, सब कुछ मशीन की तरह करते हैं काम। लेकिन इस इसके लिए कि हम उपस्थित रहें, सचेत होकर हर काम को करें, उसके लिए बहुत सारा करेज लगता है, बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत है, दृढ़ विश्वास की ज़रूरत है, दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। और हम अपनी हर गतिविधि में अपने ध्यान को सिर्फ ऐसा ही नहीं कि भाई 1 घंटा कर लिया सुबह, 1 घंटा कर लिया शाम और बाकी पूरे समय बेहोश रहे। हमें इस होश को अपनी हर गतिविधि का हिस्सा बना लेना है। होश में रहकर ही सब सारे काम करें, क्योंकि हमारी जन्मों-जन्मों की यात्रा है बेहोशी में रहने की। इतना गहरा संस्कार है हमारे मन पर, लेकिन ये जानना और ये समझ पाना कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि और विचार भी नहीं हूँ, मैं उससे कहीं गहरा, कहीं विस्तृत, कहीं बड़ा हूँ। ये जान पाना ध्यान में ही संभव है। और जब ध्यान में ऐसा एक बार महसूस हो गया, अनुभव हो गया, तब उसको अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लेना और अपनी हर गतिविधि को होश से करना, यही ध्यान को आज की स्थिति में रेलेवेंट रख सकेगा, आज की स्थिति में के प्रसंग में सार्थक रख सकेगा। बिल्कुल सही कहा है माँ ने कि हमें हर कार्य को होशपूर्ण होकर के करना होगा, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो कितने ही जन्मों से जिस तरह से चल रहा है, अगर हम होशपूर्ण होकर के अपने कार्य को करेंगे तो शायद जीवंत होकर के अंतर मन से अपने आप को जुड़ पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें ध्यान करना बेहद जरूरी है। So thank you so much, Ma, for this beautiful things to us, to telling us how dhyan we can do all this meditation with this life. Okay, Ma, I have a question, Ma. When is your book, do you think, is going to be launched or Okay. published? It's. I think it'll be in English, and I'm hoping that if there's enough interest, that somebody in India would like to translate it because it comes from India, and I would be very happy that someone translates the book into Hindi for the people. There's so many Ma, people doing it. yes, It will be yes, ready, I think, April, maybe by May this year. The English book will come out, the English version, and Ma. it will be. Mhm. I know someone who can translate your book. Okay, so I'll ask her. Okay, she has translated many books from English to Hindi. Okay, so I'll ask her to translate your book, and she'll be soon going to contact you, Ma, for this. Okay, that's fine. It all So, comes together beautifully, huh? यस, सो हमने पूछा कि माँ की जो पुस्तक है वो कब तक प्रकाशित होगी और कब तक उपलब्ध होगी। तो माँ ने कहा कि इस साल मई तक का उनका मानना है कि हो जाएगी। और लेकिन ये इंग्लिश में होगी क्योंकि माँ ने उसको इंग्लिश में लिखा है, मगर उनकी दिली इच्छा है कि ये हिंदी में भी ट्रांसलेट हो जाए, हिंदी में भी अनुवादित हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ आया भारत से ही है और ओशो की ही देन है, तो हिंदी में भी ये अनुवादित हो जाए। तो राघव जी ने कहा कि वो किसी को जानते हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबों का, पुस्तकों का अनुवाद किया है, और वो व्यक्ति माँ से संपर्क करेंगी जल्दी ही, ताकि हिंदी में भी माँ की पुस्तक हम सबको उपलब्ध हो सके। Yes, Ma, she's a professor, and yeah, she can do this translation very well. Yes, Ma. Beautiful, beautiful. Okay, so things. We need to have the book finished first, and then ready for
ready for printing, and then I can send her the complete book, and she can translate, and we can work out how that can if I could talk to her directly or through you, or however it works. That sounds wonderful. So there is one Riyama who's saying she is very impressed and she would like to organize your Mystic Rose group in Goa. So let's see. Yes. We'll get in touch with her and try and see Yeah. what is on the So, offer. yeah, Easy. Maria, please contact me on my channel's number. So I'll put it here. My official WhatsApp number. You can contact me here. Yeah. So this is my official TNC live official WhatsApp number. You can contact me here. Okay. So we'll talk about all this thing, and we'll soon definitely going to arrange for this month, this Mystic Rose meditation to Okay. entire India. That's perfect. We need someone who has a place, and it is big enough. It needs to accommodate at least 40 people, and have accommodation for them, because it needs to be pretty much residential. Otherwise, the energy gets a bit lost. Um, and yeah, and I will leave it in your hands, and we'll see what transpires. हाँ And तो ये मिस्टिक रोज ग्रुप क्योंकि रहकर ही होता है और कम से कम 40 लोगों के रहने की व्यवस्था और क्योंकि हॉल भी बड़ा होना चाहिए क्योंकि गद्दे डलते हैं एक-एक गद्दा एक-एक व्यक्ति के लिए, तो इतना बड़ा हॉल होना चाहिए और इतने लोगों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए 21 दिन के लिए और 21 दिन का तो केवल ग्रुप ही होता है, एक आध दिन पहले और एक आध दिन बाद में भी ऊर्जा के को ठीक से इंटीग्रेट करने के लिए, तो ऐसी व्यवस्था करनी होगी। तो जो भी मित्रों के पास इस तरह की व्यवस्था है, वो राघव जी से संपर्क करें। और हम फिर देखेंगे कोविड के हिसाब से जिस तरीके से भी डेट्स माँ के पास उपलब्ध होंगी और समय होगा, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। Yes, we'll be going to do this, and we have to see COVID appropriate behavior and what is the COVID situation over here, and then we'll ask to Ma Leela, and she'll be tell us about the dates, and we'll organize all this. So thank you so much, Ma, and I'm coming to the next question, Ma, because this always also. I'm thinking we're just about to end, but another question. Okay, come on. Yes, yes. Yeah, Ma, this also is a very beautiful question for you. Yeah. What you have learned about from Osho that helped you in your life and work? I thought I had answered that in all my explanation of what I've been through, and being with the master in the commune, working in his energy field, doing mystic roses, working on my own limitations and conditioning. I mean, such a gift. It comes in many lifetimes. I don't think we have the gift of someone so profound as Osho to guide us, to inform us, to give us the opportunity to absorb what he is saying, and to gain the understanding of why we are here and what is relevant in this life. It's you need a longing. You need to have the divine discontent so strong that you know that just living on the surface is not what it's about. It minimizes who you think you are, and the world around you is minimized by that understanding. Osho has just opened doors upon doors and windows upon windows, and I am not the same person that I was in any way
on a deeper level than when I began. I have gone through an enormous and at times extremely painful, because it is not easy to see your ego. It is not easy to acknowledge your limitations. It's always easy to blame somebody else, to be victims in this life, to not have to take responsibility. This is about responsibility. And this I have learned. I have no one to blame. I have only blessings that I am so grateful for. And all of it is due to this man who's given me my life back, my true life, my inner life back. So तो beautiful. राघव जी ने प्रश्न पूछा कि ओशो से आपको क्या मिला उपहार, जो कि जिसने आपकी जिंदगी को प्रभावित किया और जिसने आपके काम को प्रभावित किया। और माँ ने कहा कि मुझे लगता है मैं इस सवाल का जवाब दे चुकी हूँ, अपने सारी बातें जो अब तक मैंने कही हैं। और वो ये कह रही हैं कि ओशो के साथ रहना, उनके निर्देश में काम करना, उनकी उपस्थिति को पीना, उनके सारी जो भी उनकी गाइडेंस थी उसको लेकर उस पर चलना, बहुत सहज यात्रा तो नहीं थी, मगर उसने बहुत 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 सारा पल्लवित पुष्पान्वित किया माँ को। और माँ अब वो नहीं है जो जो जहाँ से उन्होंने शुरू किया है था। वो अपने आप को देख पाती हैं कि किस तरीके से वो पूरी तरह आमूल परिवर्तन उनके अंदर हुआ। और वो सिर्फ बाहरी तरीके से जो बिल्कुल छोटा होकर रहने की बजाय वो अपने विस्तार को देख पाई, वो अपनी गहराई को देख पाई। वो तो इस तरीके से, लेकिन ये बहुत हिम्मतवरों का काम है कि अपनी जो अहंकार है उसका विसर्जन कर देना इतना आसान भी नहीं है और इतना सहज भी नहीं है। कई बार बहुत दर्द से गुजरना होता है देख करके कि कैसे मेरी अपनी ईगो, मेरा अपना अहंकार जो है काम कर रहा है, और कहाँ-कहाँ अपने असली रूप को देखना। और जो संस्कार जन्मों-जन्मों से हमारे ऊपर पड़ गए हैं, जब परत दर परत उनकी उतरती है, तो उसका उतरना कभी तो बहुत आनंददायी होता है और कभी बहुत दर्ददायी भी होता है। तो लेकिन उस सारी यात्रा से माँ गुजरी और उन्होंने वो उनके पास शब्द ही नहीं है अपने अहोभाव को व्यक्त करने के लिए, जो कि जीवन में ओशो का उपहार उनको मिला, जो ओशो का संग उनको मिला, जो ओशो का निर्देशन उनको मिला। उनके जीवन को उसने आमूल रूप से परिवर्तित कर दिया और उनको अनुभव करने दिया कि वो कौन है। वो सिर्फ ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि नहीं है, उससे बहुत 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 कहीं आगे है। उस सब का जो उन्होंने अनुभव किया, उसका सारा श्रेय, सारा अनुग्रह, सारा अहोभाव ओशो के चरणों में समर्पित है। माँ पूरी तरह ओशोमयी है। बिल्कुल। So before you say you have another question, I think we need to round up now. Yes, so Ma is requesting Raghav to माँ आप कह रही हैं कि राघव अब खत्म करें, अब बहुत बातें हो गई हैं, अब वो मेरे ख्याल में अपने अपने अंदर ओशो को महसूस करके चुप बैठना चाहती हैं। And so just to finish, I want just to say a few more words. If Yes, this is a very rare opportunity. Osho has just been in this world physically in our time, and this is an opportunity. The books are there, the videos are there, all the information that he poured into us is available to everyone. And it doesn't matter that he is not here physically, he is here energetically. The people who have come have always said, some say, oh, I'm so sad that I did not meet Osho in person.
I tell you that I feel his presence, and not in any other way than it being something in me is as alive and as vital and as urgent as when he was in the body. And this is up to each and every one of us, is to feel this urgency and not to miss this opportunity, because it may not come for a very long time again. And with that, I want to thank Anjali for your wonderful translation, and Swamiji for offering to put this program on. I am very grateful for me to have opportunity to speak, because this is my love. This is a love for me when I can share. And I'm very grateful to both of you for the love and the care that you've taken in creating this. Thank you so much. Thank you, Thanks to Ma. you. Thank you so much. All thanks to you and to Osho, because this is a great pleasure to us that you are here with us and you have shared about your life, your all the experiences, and so we are blessed that you are here with us on TNC Live channel with us, Ma. And Thank you thank you. so much. तो जाने से पहले माँ बस एक ही बात कहना चाहती हैं कि ये बहुत 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 बड़ा और बृहद अवसर है सबके लिए, क्योंकि सारा साहित्य, सारे प्रवचन, सब कुछ उपलब्ध है, सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, सारे ऑडियो के प्रवचन उपलब्ध हैं, सब कुछ उपलब्ध है। अब इसका उपयोग कर लेना और अपने जीवन को बदल लेना, ये हमारे हाथ में है। ओशो, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ओशो ने शारीरिक रूप में अवतरित होकर हमें ये अवसर दिया, और ये अवसर हो सकता है अब बहुत लंबे समय तक ना उपलब्ध हो, तो अभी जब हमें उपलब्ध है तो हमें इसका पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। और माँ का मानना है कि ओशो हम सबको वैसे ही उपलब्ध हैं जैसे शरीर में थे, बल्कि उससे भी ज्यादा उनकी उपस्थिति, उनकी गाइडेंस, सब कुछ आज माँ उसी शिद्दत के साथ महसूस करती हैं कि उनके साथ है, उनके अंदर है, जैसी कि जब ओशो जीवन में थे तब था। तो इसलिए हम सबको, जो कोई भी ये कहता है कि हम ओशो से नहीं मिल पाए, हमने फिजिकली फेस टू फेस उनसे नहीं मिले, हमारा उनके साथ साक्षात्कार नहीं हुआ, उन सबको ये मिथ्या भ्रम है। ओशो बिल्कुल उपलब्ध हैं, उतने ही उपलब्ध हैं जितने तब थे। तो आप सब अपने हृदयों को खोलें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, ध्यान करें और अपने आप को जानें और अपना विस्तार करें। यही माँ की कामना है। और माँ हम सबसे मुखातिब होने के लिए, हम सबसे बात करने के लिए बहुत 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 अहोभाव में हैं, क्योंकि मिस्टिक रोज और ध्यान और ओशो उनका जीवन है, उनका प्यार है। वो इस प्रेम को जब भी उड़ेलती हैं, वो खुद भी इस प्रेम से सराबोर हो जाती हैं। इसलिए वो राघव जी के लिए भी और इस प्रोग्राम के लिए भी बहुत 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 अनुग्रहित हैं, और हम भी उनकी उपस्थिति में होने से, उनसे बातें करने से बहुत अनुग्रहित हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। And Ma, there is a one again. This Swamiji said, "Can we laugh for a two जस्ट फॉर minute अ मिनट। with just for a minute?" Yes. Why not? Go ahead. याहू!
Osho! Oh, Oh my goodness me. thank you so much, Ma. Oh, Thank you so much. it's a pleasure. Oh, Gratitude so to you, Ma. I will speak with you soon. Yeah, sure, Ma, sure. Yes, Thank you, Ma. Thank you. Pranam. Thank you. And thank you to all these lovely people who have been watching and sending lovely messages. Bless you. Thank you so much. Every bit of gratitude is very much appreciated, but I have been also the one who has been very much gifted. So thank you. Okay. Okay. Good night. Thank you, Ma. Pranam. And have a good day. Pranam, Ma. Okay.